So hello everyone and welcome to Career Launcher. So welcome again for because we are starting a new series and that is a current affairs revision series part 1. So this class we will be doing Monday to Thursday at 6 p.m. and I am starting this current affairs revision from the month of January onwards. Okay? January 2024 onwards. So in today's class, I will discuss events or important news that was in the news in January, and you can say some portion of February as well. And in this way, most likely in chronological way, like January, then February, then March, like that. I will keep on actually discussing the revision, the important things, or the revision of that, and mostly it will be in question and answer format. So, am I audible and visible, guys? मेरी आवाज आ रही है, voice is clear. Yes, good evening guys, good evening everyone. And I hope you all are very much excited, very much energetic to have the revision series. So let's begin. So am I audible, visible, everything is clear? एक बार आप लिख दो comments में so that we can start. Yes, everything is clear. ठीक है? Energy is high. Okay, so let's begin with the first question. And the first question is actually talking about only this video for the month of January. नहीं, Sharma, it is not like that. I'm just explaining कि जनवरी से I'm starting और जितने भी important events है वो शुरू होते जाएगा, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, like that, है ना? On 1st January 2024, ISRO launched which of the following mission? Now, because we are beginning with the 1st January of this year, so you should know it, and I am expecting you all to answer. Yes. So Devansh, Jan, Gargi, Mishika, Ramjosh, Ayush Singh, Shekhawat, Sanya Sharma, Dhriti, you all were right? Yes, Aditya L1 was last. Very good. Devansh, Tanishka, Aditi, Ayush, you all were right. The right answer is ExpoSat. Please tell me the full form of this. If anyone can tell me, I'll be very happy. So B is the right answer to this question. Now, ExpoSat X-ray polarimeter satellite इसको कहते हैं, ठीक है? It is a space observatory launched by ISRO. मानो मैंने एक एग्जाम में ये देखा था पूछते हुए, full form of ISRO, Indian Space Research Organization, ठीक है? Yes, X-ray polarimeter satellite. Yes, Mishika and V Sharma had answered me. Very good. Okay, so this was launched on 1st January. That is what you should be knowing. अच्छा, कोई बंदा ये बता सकता है, can anyone tell me on which rocket or on which launch vehicle it was launched? Launch vehicle या rocket एक ही चीज होती है, ठीक है? Launch vehicle is more professional word which is used, but rocket भी चलता है, ठीक है? Can anyone tell me? I'm waiting for the response. तो ExpoSat देखो, ये मैं ISRO की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ. Okay, it carried two scientific payloads. One is called as POLIX, polarimeter instrument in X-rays, और दूसरा है X-SPECT, X-ray spectroscopy and time payload. So ये दो payload के साथ ये गया था. PSLV, which one? C58. Yes, Mukti Sharma, very good, fantastic. PSLV C58. ऐसा PSLV तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, but I was expecting कि exactly आप बता देते, I would have been very happy. Yes, I have got one right, exact right answer. Otherwise, PSLV, many people have said. Yes, Ramjosh is also right. PSLV C58. अच्छा, now I have one question. इसलिए कि एग्जाम में पूछा था, आई थिंक एलेट में किसी एग्जाम पूछा था कि PSLV और GSLV का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. सो प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ PSLV एंड GSLV, ठीक है? खैर, तो PSLV C58 देखो, ये जैसे है ना, ये PSLV C58 है. I hope you can see it in the image. ये वाला. Okay. So this is PSLV C58. Now, if you see it carefully, तो इसकी जो टॉप में होता है, यहां पर पेलोड रखा होता है, सिर्फ टॉप में. पेलोड मतलब वही जिसको जो भेजा जा रहा है. यहां देखो, ये ना पोलिक्स और एक्सपेक्ट. So this is the payload. बाकी रेस्ट में तो फ्यूल्स वगैरह होते हैं और इंजन्स वगैरह होती है, ठीक है? So the name of the rocket is PSLV C58. Okay. And PSLV stands for Polar Satellite Launch Vehicle. GSLV stands for Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Yes, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया PSLV and GSLV, and I'm very happy that you all are actually knowing the PSLV and GSLV full form. I cannot take everyone's name,
धरनी, आयुष, धृति, तनिष्क, नामो, देवांश, विशिका, धृति, गार्गी, तनिष्का, वीर शर्मा, you all were right. ठीक है, so you should be knowing about these PSLV and GSLV. Okay, let's move on. अच्छा, एक चीज आप बता देता हूँ, बिकॉज इसरो से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं. इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट फ्रॉम विच लोकेशन, बता सकते हो? ठीक है, कौन से लोकेशन से लॉन्च करती है, उस शहर का, उस आइलैंड का नाम क्या है? ठीक है, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर, हु इज द चेयरपर्सन, एंड मेनी अदर थिंग्स, एंड एनी प्रोमिनेंट इसरो मिशंस लाइक आदित्य एंड गगनयान, चंद्रयान एटसेट्रा. इस क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है, आप जाके देख लेना. जस्ट इसको यूट्यूब पे सर्च करना है, दिस यू हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब, यू विल गेट दिस वीडियो एंड वॉच इट. हाँ, श्री हरिकोटा सतीश धावन स्पेस सेंटर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक. So many people have answered me correctly. That's called as SDSC. Yes, Mohan Rao, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. तो मैंने मैप वगैरह सब बताया है, उसके आसपास लेक्स है, that I have already told you in that class. Now let's move on to the next question. Please read the question and I'm expecting all the answer to be written in one option. देखो क्वेश्चन पहले देखना है गौर से. The question is what are X, Y and Z respectively. तो तीनों एक कमेंट में आंसर करना है, अलग अलग कीजिएगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा किसने क्या आंसर किया. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज अ स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर्ड फाइनल ऑर्बिट ऑन 6 जनवरी. इट वाज लॉन्च ऑन 2 सितंबर लास्ट ईयर. ठीक है, ये 2024 के से निकल गया, 2023 हो गया ना, लास्ट ईयर इट वाज लॉन्च. ठीक है, सो इट वाज लॉन्च फ्रॉम डैश. फ्रॉम यहां पर मैं सतीश धवन स्पेस सेंटर नहीं पूछ रहा हूं, एक्चुअली यहां पे मैं पूछ रहा हूं लॉन्च व्हीकल का नाम. ठीक है, और तीसरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, रीड इट एंड देन आंसर मी. ओके, बिकॉज लॉन्च 90% केसेस में सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही होता है. ठीक है, सो आई एम आस्किंग द लॉन्च व्हीकल. एक्स इज आदित्य L1. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड. आदित्य L1 इज अ मिशन फॉर सन, है ना. आदित्य L1 लाग्रांजे पॉइंट से आप पकड़ सकते थे. एंड द प्रोजेक्ट डायरेक्टर किस लोगों ने आंसर किया? मोहन राव ने बताया, निगार शाह जी, नामो ने बताया है, दानिश खान ने बताया है, वेरी गुड. वीर शर्मा फर्स्ट वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यस. आयुष सिंह, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. आदिवांश, मुक्ति शर्मा, मिशिका, आदित्य, PSLV C57, नमो सिंह, एनीवन एल्स? ओके मैम, आई एम सीइंग ऑल योर आंसर्स, आप लोग लिखते जाओ. ठीक है, सो लेट मी शो. एक्चुअली 6 तक देखो हुआ ये था कि लास्ट ईयर सितंबर में लॉन्च हुआ था, लेकिन L1 पॉइंट पर इस साल पहुंचा था जनवरी में. ठीक है, सो बी केयरफुल दिस. सेकंड थिंग, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाह जी, सो यू कैन गिव दिस एन एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. शी इज एक्चुअली आई थिंक फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला. कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजा गया? C57, PSLV C57. And I have seen many answers. C57, yes. Ramjosh ने आंसर किया, then Mukti Sharma, Divansh, Tanishka, Deeptakshi, all were right. Very good. So actually PSLV C57 was the rocket on which it was sent. Now can anyone tell me, कोई बच्चा बता सकता है कि लाग्रांजे पॉइंट होता क्या है? What is so special about Lagrange point? So if anyone can tell me, I'll be very happy. There are 5 Lagrange points. If you can see, this is sun, दिस इज अर्थ. ठीक है, और ये L1, जैसे L1, L2, L3, L4 आप देख सकते हो, दिस यहां पे भेजा गया. दिस इज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 1.5 मिलियन किलोमीटर. L2 is James Webb Telescope. Very good नाम. हाँ, L1 point of the gravitational force of two bodies equals etc. Yes, Mishika, very good. मैंने कहने का मतलब है कि net force is 0 here. तो इस जगह पर जैसे मान लो यहां से, लेट मी एक्सप्लेन, अगर यहां से जब गया L1 की तरफ, तो यहां पर अगर स्टेशन होगा तो उसमें फायदा, बेनिफिट ये होगा. द बेनिफिट इज दैट इट विल हैव ऑलमोस्ट 0 फोर्स. सो उसका फ्यूल सेव होगा ना, कि कहीं से कोई ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल नहीं लग रहा. एंड फ्रॉम हियर इट विल स्टडी अबाउट सन. ठीक है, यस, नेट फोर्स इज 0. यस नंदिनी, तनिष्का, वेरी गुड, गुड, है ना. तो आप लॉजिक दे सकते हो कि जो भी इसका फोर्स है, और आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट इन डिटेल, बट यू शुड नो. अच्छा, पता है ये बस 1% है डिस्टेंस, और ये 99% डिस्टेंस है. मतलब इतना दूर से रिसर्च करें, बिकॉज इफ यू गो नियर टू सन, आई होप यू आर अवेयर व्हाट विल हैपन, थिंग्स विल गेट बर्न.
तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड L2 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है. किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कमेंट सेक्शन में, आई हैव सीन इट, दैट समवन हैड रिटन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज देयर. ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में. खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड आंसर मी. It was in the news in the month of January. We had seen some protest as well related with this. Yes, Veer Sharma. They'll say Nandari Shigo. वीर आयुष सिंह, यू ऑल राइट. देखो, एक चीज ये पूछा सकता है, गोंड कम्युनिटी पूछा सकता है. दिस इज अ ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन दैट रीजन, इन द अराउंड छत्तीसगढ़ रीजन एंड ऑल. देयर इज इन फैक्ट हसदेव रिवर आल्सो. यस, and it was recently in news because of protest against deforestation. So it is Hasdeo Aran forest. ठीक है, this you should be knowing about it. तो ये काफी न्यूज में था. इफ यू कैन सी, ये जनवरी में न्यूज में था, down to earth में. Then even in August also it was very much in the news. Now there's another question which has already been answered by one of my student, and here is the question which is actually linked with Hasdeo forest. And the Goldman Environment Prize was given to an Indian also. It has been given to many people, but there's one Indian also who has got this award for fighting for Hasdeo forest. अच्छा, S छूट गया, Hasdeo है, ठीक है. Yes, very good Alok Shukla, very good Veer Sharma, Dharani, Dal Singh, not Mishika, Ayush Singh, Mukti, Tanishka, Pallavi. बहुत से लोगों ने आंसर किया. I couldn't take everyone's name. Yes, Nandini, Deeptakshi, Mohan Rao, you all were right. So Alok Shukla has got this award, Goldman Environmental Prize. We have already discussed. ये हसदेव रिवर की फोटो है, आप देख सकते हो. You will find it in the state of छत्तीसगढ़. तो ये है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, and here you will find हसदेव फॉरेस्ट. ठीक है, okay. Now let's move on to the next question. The next question is, the Pran Pratishtha of Ram Mandir happened on which exact date? Because this also happened in January, and I'm expecting that you all should be knowing. Pran Pratishtha मतलब एक तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी है, कंसेक्रेशन सेरेमनी कह सकते हो. सो इट हैपेंड ऑन व्हिच एग्जैक्ट डेट? प्लीज टेल मी. Oh my god, I thought everyone would be right, but I have seen some diversions also. The right answer is 22nd January 2024. कुछ लोगों ने चलो कोई बात नहीं, होता है, but I have seen 95% people saying 22nd January 2024. ठीक है. Yes, very good. So this you should be knowing about it. ये आपको पता होना चाहिए. In Ayodhya it happened. It was actually very much became famous and all. The main chief guest was Prime Minister Narendra Modi himself and all. Now I have some more questions regarding it. The first is Ayodhya. Actually, please tell me that it is in Ayodhya. So please tell me the river that passes through it. Second question is, what is the name of the judgment which led to this? So Supreme Court judgment का नाम बताना है आपको. Because last year मैं जब sample paper देख रहा था, last year I was seeing a sample paper in which they had asked the name of the judgment. उस टाइम पर EWS reservation का judgment आया था. So they do ask the name of the judgment of Supreme Court also. ठीक है, ये तो सरयू रिवर है. ठीक है, सरजू कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे सरयू ऐसे लिखते हैं. Sometimes I have seen some people call it as Saraju. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो ऑप्शन जैसा मिलेगा. You can. Now please tell me exactly perfect answer चाहिए. Supreme Court judgment का नाम बताना which came in November 2019. The 5 judgments, 5-0 passed in order. Yes, Mishika has answered me correctly, perfectly. I have got only one right answer. Yes, Tanishka is also right. Mahan Suresh versus Siddiq. ठीक है, perfect answer is Mishika ने दिया. M Siddiq versus Mahan Suresh Das Pallavi Singh Mukti Sharma. You are right. Good. So the name of the judgment actually is, let me write here, M Siddiq versus Mahant Suresh Das case. ठीक है, the judgment came in 2019 November, so you have to write. Please remember it.
बिकॉज चूंकि जनवरी में न्यूज में था, सो देयर इज हाईली लाइकलीहुड दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. The next question is also very important. The Ram Mandir in Ayodhya is built in which style? Nagara, Vesara, Dravidian, none of the above. Yes. Delsin Donut is saying Nagara, Dharini, Nandani, Veer Sharma, Ram Josh. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. I cannot take everyone's name. Nagara style, because let me explain. देखो, actually क्या? You should have some rough idea. Yes, Dravidian is in south. Yes, Namo, right. In North India, mostly the temples are built in Nagara style. So you can remember N say North, N say Nagara. And South India, mostly you will find, especially in Tamil Nadu region, you will find Dravidian temples in Dravidian style. Okay. And Vesara style, you will find it somewhere here in Karnataka region. That's called as Vesara style. And it is said that Vesara style has influence of both Nagara and Dravidian temples. So it's actually a mixture of that, or influence from both. Okay. That is what you should be knowing it. So the answer is Nagara style is the right answer to this question. Now, there are two questions, and you are supposed to answer both the answer in the same chat, in the same statement. Who is the chief architect of the Ram Mandir in Ayodhya? उनका नाम बताना है. Who is the sculptor? ये दोनों अलग अलग पर्सन. Sculpture मतलब होता है जो मूर्ति डिजाइन कर दें. So what is the name of the person who had designed that idol? दोनों आंसर एक ही कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज. Yes, very good. Lavina had answered both the questions correctly. हाँ, Chandrakant Sampura Yogiraj. Yes, Dharini, Namo, Ayush, Meshika, Nandini, Devanshu, all right. Good. So the chief architect was actually Chandrakant Sampura, Mr. Chandrakant Sampura, and he was supported by or assisted by two sons, Mr. Nikhil Sompura and Mr. Ashish Sompura. Okay. और मैंने बताया था स्कल्पचर है ना. So his idol of Ram Lalla, the child form of Hindu god Rama, is also installed at Ayodhya's Ram temple. His name is Dr. Arun Yogiraj. ठीक है. So and he is, I think, from South India. Mysore, Karnataka. So these are the famous personalities you should be knowing about. Now let's move on to the next question. Who was the chief guest of the Republic Day 2024? There's a request, guys. Everyone, please press the like button and subscribe to the channel also, and press the bell icon because we'll be coming up with a lot of content in the upcoming weeks. Yes, Emmanuel Macron. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. And who is that? I mean, like, please tell me the designation. Yes, French president. Very good. So the answer is Emmanuel Macron. In fact, he had gone to Jaipur also. So to be chief guest at Republic Day celebration, he is the French president. And you know, last year he invited Modi ji at a very prominent event of France. What is that event? बताइए. पिछले साल इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी को बुलाया था एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में. उनका मतलब जैसे हम लोग का रिपब्लिक डे होता है, समथिंग सिमिलर टू दैट. उनका they had their own. Yes, very good. Bastille Day, Ram Josh, very good. 14 July 1789, French Revolution happened. This is the date of French Revolution, and that is why 14 July को they celebrate Bastille Day. Very good. Good. Very good. बहुत सारे लोगों ने लिखा. And that is why actually PM Modi was invited as a chief guest. ठीक है, तो उनका वो नेशनल मतलब एक तरह से नेशनल फेस्टिवल कह सकते हो, like that. He was given the Grand Cross of the Legion of Honor. Very good, Mishika. Good, fantastic. Now, let's move on to the next one. The civilian awards which are announced around January and all. Just generally around Republic Day and all, these are announced. Name the highest civilian award in India and name the 3 Padma awards in sequence. और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए. Because मैंने पूरा class, great class I have taken. In sequence means in the order of the prestige. Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Yes, they'll see not Mukti Sharma, B Sharma, Namo. बहुत सारे आंसर के. Very good. So the first is Bharat Ratna. The second prominent is Padma Vibhushan. The third is Padma Bhushan, and the fourth is Padma Shri. ठीक है. और इन तीनों को पद्मा अवार्ड्स भी कहते हैं. ठीक है. First, second, third, fourth.
इट्स एक्चुअली ऑन द रैंकिंग वाइज, रिस्पेक्ट के हिसाब से कह लो या ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है. So this you should be knowing it. Go and read about it. ये सब मैंने पढ़ाया है already. I have made a separate video on Bharat Ratna and all. If you are interested, you can go and read about it in detail. But इससे related जो भी चीज है, fast revision since we are doing it, तो मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ. And I'm expecting कि भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड फर्स्ट कब दिया गया? 1954. Yes, धारिणी वी शर्मा, नंदिनी मोहन राव, चारवी जैन, नंदी और राइट 1954 में दिया गया, ठीक है. And who was yeah were the first winners? Please tell me the winners name of Bharat Ratna. पहले विनर्स ये सब पूछा था कई बार एग्जाम में, मैंने देखा है कि पहले विनर्स कौन थे, उनका नाम बताइए. ये which of the following is not one of them or something like that. Actually there were 3 winners. And who are those 3 winners? Yes, very good. Namo Veer Sharma. Yes, very good. इन तीनों का नाम बताइए. सो नाम इज सी राजागोपालाचारी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना. एस राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन सीवी रमन, अ वेरी फेमस साइंटिस्ट यू कैन से और फिजिसिस्ट, है ना. 1954 में दे हैव गॉट. वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर किया. वेरी गुड. धरणी मोहन, नंदिनी, तनिष्का, यू ऑल राइट. तो ये दिया जाता है. दिस इज एक्चुअली द सिंबल और लोगो ऑफ भारत रत्न, ठीक है. भारत रत्न लिखा, उसके पीछे इंडिया का एम्ब्लेम बना हुआ है, ठीक है. You can say this Satyamev Jayate emblem is national emblem is made. Now if you read it carefully, the national emblem, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, this has been taken from Ashokan pillar, right? का हिस्सा से लिया गया ना. And the second half is taken, Satyamev Jayate has been taken from, कहां से लिया गया? Yes, Ishigo, Veer Sharma, Nandini, Dharini. Yes, it has been taken from Mundak Upanishad. कई जगह एग्जाम में पूछा जाता है. You should know it because these are asked in the exam, and that is why you must be knowing it. Yes, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Who among the following is the youngest recipient of Bharat Ratna? ये सब मैंने बताया है. So I am expecting, I am going slightly faster, believing that you all should be knowing it. The right youngest winner of Bharat Ratna is actually Sachin Tendulkar. D is the right answer to this question. Yes, very good, very good. Anna, yes. Veer Sharma, Sia, Dharni, Mohan Rao, Ramjas, Mishika, you all the right. Huh? First to get Bharat Ratna posthumously after his death, this person was the first to get the Bharat Ratna. What is the right answer? The right answer actually is Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. C is the right answer. Yes. Sharvi Jain, Mohan Rao, Devansh Mukti Sharma, you all right. Who was the first non-Indian to get Bharat Ratna? क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से मैं जल्दी फास्ट में डिस्कस कर ले रहा हूँ. आई एम गोइंग लिटिल फास्टर बिकॉज आई हैव मेड अ सेपरेट क्लास ऑन दिस भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड. सो गो एंड वॉच दैट. इसको मैंने फास्ट में रिवीजन करा दिया. खान अब्दुल गफ्फार खान वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट. इनफैक्ट ही वाज अ पाकिस्तानी सिटीजन. सो बी इज द राइट आंसर. ही गॉट इट इन 1987. ठीक है. तो अदर नॉन इंडियंस जो है 2 को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला को. आई होप यू आर अवेयर. Mother Teresa was an Indian citizen. She acquired Indian citizenship. I hope you are aware of these things. Okay, let's move on. Which of the following has not been given Bharat Ratna this year? देखो इस साल how many people have got Bharat Ratna this year? 2024 में 5 people. इन 5 में से 4 ऑप्शन में से कोई एक जिनको नहीं दिया गया. सो यस, अटल बिहारी वाजपेयी हैड गॉट भारत रत्न बट अर्लियर, नॉट दिस टाइम. ठीक है. A is the right answer. Very good. Many people have answered me correctly. So these are the 5 winners of Bharat Ratna this year, and this is very, very important. Please tell me, out of these 5, which person is famously called as father of Green Revolution in India? इन 5 में से किनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं? देखो ये 5 लोग हैं. ठीक है. पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह. दीज 2 आर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स पीएम. कर्पूरी ठाकुर वाज एक्स सीएम ऑफ बिहार. एल के अडवाणी इज एक्चुअली एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यस, एम एस स्वामीनाथन, ही डाइड लास्ट ईयर. ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव आंसर्ड मी करेक्टली. वेरी गुड, फैंटास्टिक. Okay, so go and read about these personalities in detail. ठीक है. I am expecting you all that you should be knowing. एक चीज और पता होना चाहिए. पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर ही 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था. कई बार एग्जाम में पूछते हैं.
that who was the Prime Minister of India when liberalization, privatization, and globalization reforms happened? So it is 1991. It is actually P.V. Narasimha Rao in 1991. Okay, the next is, since we are talking about it, there was a case in the Supreme Court of India regarding it. Abolition of titles, actually someone filed a petition under Article 18 that this is violation of under article. And what is the name of the judgment? Balaji Raghavan. Very good, Veer Sharma. So basically, what happened was actually abolition of titles is mentioned there. तो जैसे अब सर है या उस तरह को राय बहादुर इस तरह का अर्लियर टाइटल वगैरह दिया था, तो अब नहीं दे सकते. अब नाउ यू कैन टेक बिकॉज इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन एंड ऑल. ओके, तो इसके लिए केस हुआ था एंड इन दिस सुप्रीम कोर्ट upheld it. It said that no, it is not a title under article 18. It is rather an award. ठीक है, yes, ठीक है. Okay, now we are talking about इस साल तो भारत रत्न का देख लिया. पद्म विभूषण अवार्ड, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनमें से किसको नहीं दिया गया इस साल? So let's discuss something about this Padma Vibhushan. Yes, and why is she famous? Just why is she famous? This is the right answer. The Padma Vibhushan is the second highest civilian award given to 5 personalities. And Vijayanti Mala KJV, he's actually former Vice President of India. Bindeshwari Pathak, you know, is very famous. He was having Sulabh International, both famous NGO based in Bihar and all. Then P. Subramaniam and all. So these were the winners of this. Yes, Justice Fatma Bibi was the first woman judge of Supreme Court of India, and she died last year. ठीक है, इनको भी award मिला है, but she has got which award? Not Padma Vibhushan, not Bharat Ratna, but she has got Padma Bhushan is the right answer to this question. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. That she has got, she died last year and she was given this year Padma Bhushan, the third highest civilian award of India. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. Then मिथुन चक्रवर्ती, इनको इस अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया. I hope you are aware, है ना, 2024 में. ठीक है. Then there are other personalities also you can see, है ना, पद्म विभूषण के लिए. ओके, सो नाउ पद्म श्री के लिए भी बहुत सारे लोग हैं. आई हैव नॉट अटैच्ड ऑल दोस नेम्स बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, तो आई एम स्किपिंग दोस. जितना इंपॉर्टेंट था मैंने फास्ट रिवीजन करा दिया एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अदर टॉपिक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन. वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? थीम बताना है एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट ऑन दिस डे. आई हैव टॉट दिस, आई स्टिल रिमेंबर. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब आंसर कीजिएगा. What wetland? This is a previous year question, in fact, as well. Yes, Nandini, Namo, Lavina, you are saying. 2nd February, theme क्या है? Very good, Veer Sharma. Very good, fantastic. Veshika, Delsin, Donut, Dharini, Mukti, you all are right. Why celebrated? Because 2nd February 1971 को Ramsar Convention was signed, and theme is wetlands and human well-being. This is the theme. This also we have discussed. मैंने एक क्लास लिया है सेपरेटली रामसार कन्वेंशंस पर, बिकॉज वी कम अक्रॉस रामसार कन्वेंशन अगेन एंड अगेन इन द न्यूज. तो आपको यूट्यूब पे जाना और ये सर्च करना है रामसार कन्वेंशन करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. यू विल गेट दिस वीडियो. आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल about Ramsar Convention because Ramsar always in the news. World Wetland Day was asked in CLAT 2021, the themes etc. ठीक है, तो रामसार कन्वेंशन अक्सर न्यूज में रहता है, इससे सवाल आ सकता है. कितने साइट्स है, हाउ मेनी साइट्स आर देयर, ऑल दीज आई हैव डिस्कस्ड हियर. ठीक है, न्यू साइट्स जो ऐड किए गए, न्यू साइट्स आई हैव डिस्कस्ड. क्योंकि अब नाउ आई टॉकिंग अबाउट डेज एंड थीम्स. तो एक और मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा, जो सर्च ऑन यूट्यूब दिस, इसको सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, यू विल गेट दिस. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम मस्ट रीड है. प्लीज डू नॉट स्किप दिस. ठीक है, सो दिस यू शुड बी knowing about. Now the next one is which state has become the first state in India to come up with uniform civil code after Goa? Because Goa में actually शुरू से ही था, after the Portuguese rule ended. Not exactly uniform civil code, but something similar to uniform civil code there is already there in Goa. तो जनवरी के आसपास ये न्यूज में था, जनवरी फरवरी के आसपास. यस, बहुत से लोगों ने आंसर किया. वेरी गुड. द राइट आंसर एक्चुअली इज द स्टेट ऑफ यूके, मतलब उत्तराखंड. हाँ, पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 में था. यस, देल सिंह डोनट, यू आर राइट. यस, वीर शर्मा, यू आर आल्सो राइट. तो गोवा वी गॉट इंडिपेंडेंट. गोवा गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल इन 1961.
So B is the right answer, है ना? So this has been in the news about Uniform Civil Code. Now, since we are talking about Uniform Civil Code, the question that comes to our mind is this. गोवा बिफोर यस राधिका अग्रवाल, गोवा में जो है ना पोर्चुगीज रूल था, तो पोर्चुगीज सिविल कोड पहले से चला रहा था बिफोर द इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग इवन टुडे. Which article talks about uniform civil code, और वो कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? In which part of the Indian Constitution this is mentioned? Yes, Article 44 DPSP, which actually states shall endeavor to secure its citizen uniform civil code throughout the territory of India, and it is actually mentioned in DPSP, Directive Principle of State Policy, which is actually part 4. Very good. Part 4 of the Indian Constitution is DPSP, right? बहुत से लोग आंसर किया. Good, very good, fantastic. Good, great. Now let's move on to this topic, and this is very, very, very important. So actually I am giving you this as a sort of a homework. The reason, there are 2-3 reasons. ठीक है. The first is, अगर आप बता दो so I'll be very happy. Otherwise I am giving you this as a homework, and I will ask you in the next class. So the question is, what is the name of the judgment of the Supreme Court which invalidated electoral bond in India? Very, very, very important. अगर आप बता दो, I'll be very happy. Second thing is, which bank has got the right to issue the electoral bond? दूसरा क्वेश्चन है. तीसरा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन बताने में कितना किसमें दिया जाता था. ठीक है, these are 3 questions. I'm waiting for the response if anyone can answer. चौथा ये बताना है कि why did Supreme Court invalidated? Why invalidated? Yes, बहुत से लोग ऐसे आंसर कर रहे हैं. वेरी गुड. हाँ, ADR एसोसिएशन डेमोक्रेटिक. यस मिशिका, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने क्या धारे नहीं. यू ऑल राइट. दिल सिंह, नट वीर शर्मा, यू ऑल राइट. Violation of right to, which article? Actually, you're right. A violation of right to information. Which article? The Supreme Court specifically quoted this article, that this electoral bond is violation of this article of the Indian Constitution. That is why we are invalidating it. SBI करती है तो पता होगा, electoral bond जो है 1000, 10,000 इसके denominations में होता है ना? And it violated fundamental right 21. Yes, ठीक है. Yes, 91 1A also that's in it. हाँ. So basically, the 5 judge bench of the Supreme Court invalidated because of Article 19 1A, which talks about right to freedom of speech. इसमें क्या लिखा है? Right to freedom of speech, है ना? तो आप बोलोगे सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसका राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना? Because the Supreme Court in one of its past judgment had said that right to information is a fundamental right under Article 19. Article 19 आप पढ़ोगे तो right to information is nowhere mentioned. But yes, in the Supreme Court in the past judgment had said that right to information is a fundamental right under Article 19. Even Article 21 भी कई बार लिखा था. ठीक है, ठीक है. So that is what you should be doing, and this is the reason why the Supreme Court invalidated the electoral bonds in India. ठीक है. अब देखो, मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, वो मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया है. द फर्स्ट होमवर्क जो आपको नीचे कमेंट में लिखना आफ्टर द क्लास इज ओवर इज दिस. आई हैव सीन सम पीपल आंसरिंग इट, लेकिन आपको बताना है आफ्टर द क्लास इज ओवर यू विल बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड वीडियो. सो राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट एग्जैक्टली. ठीक है, विच अंडर विच द इलेक्टोरल बॉन्ड वेर इनवैलिडेटेड इन इंडिया. सेकंड बताना है, एक पास का जजमेंट है वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट. ये इस जजमेंट का नाम बताना है. And later on it was RTI Act was passed by the Parliament of India in which year? ये बताना है. So 3 things. First, you have to tell me the name of the judgment of Supreme Court which invalidated electoral bond. Second, RTI is a fundamental right, which judgment of Supreme Court said, and RTI Act later on was passed by the Parliament in which year. ठीक है. So these are the 3 homeworks and I'm expecting you all to answer it in the comment section. एक ही comment में तीनों आंसर लिखिएगा. ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद, because otherwise it will have issues, है ना. So this is, I'm ending the class now. I'll be meeting you tomorrow at 6 p.m. ठीक है, and I will try my best to cover most of the things.
so that it would be a good class for you. It would be very, very helpful for you. Okay, so thank you everyone. Please press the like button, subscribe to our channel, and press the bell icon. Thanks for watching. Have a nice day.